Hello student, good morning to all of you. So student, we have to see the first topic integer. Okay, we have to see first topic integer. In previous period, we have to start the exercise 1.1 and we have to learn the first two example in exercise 1.1. So in this period, we have to start the next example is example number 3. We have to start example number 3 in exercise 1.1. Represent the following statement. We see the example. Represent the following statements mathematically using opposite names. Okay. Represent the following statement mathematically using opposite names. आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उसके आपको क्या लिखने हैं? राइट द स्टेटमेंट इन अपोजिट फॉर्म एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट द मैथमेटिकल फॉर्म। ये आपको मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिखना है और अपोजिट फॉर्म में भी लिखना है। मैथमेटिकल मींस राइट इन अ नंबर फॉर्म और राइट इन अ न्यूमरल फॉर्म। सो फर्स्ट एग्जांपल इज हाइट ऑफ 300 मीटर एट द सी लेवल। हाइट ऑफ द 300 मीटर एट द सी लेवल। फर्स्ट एग्जांपल इसमें आपको बोला है हाइट ऑफ द 1300 मीटर एट द सी लेवल। सी लेवल से कितना मीटर ऊपर है? 1300 मीटर। सो वी नो द अपोजिट ऑफ हाइट। हाइट मींस अबव द 1300 मीटर अबव द सी लेवल। सो अपोजिट ऑफ हाइट और अपोजिट ऑफ अबव मींस बिलो। ओके, height opposite of height is below. So we have to write the statement 1300 meter below the sea level. 1300 meter below the sea level. So write in opposite form. height की जगह पे क्या लिखना है? below. So 1300 meter below 1300 meter below the sea level. Below the sea level and also represent in mathematically. So 1300 meter below the sea level write in a numeral form. Below means minus. Okay, below means minus. So represent the number in negative integers. So or 1300 meter represent in negative sign. 1300 represent in negative sign because 1300 meter below the sea level. Below means negative. Okay, and this is also represent the negative integer. So answer is 1300 meter below the sea level or minus 1300 meter. Okay, minus 1300 meter. Then similarly the second example, deposit of rupees 3000. Deposit of rupees 3000. So what is the opposite of deposit is? Deposit means saving. So opposite of saving is withdrawal. Opposite of saving is withdrawal. So withdrawal, write the opposite of deposit. Withdrawal, withdrawal of rupees 3000. Okay, withdrawal of rupees 3000 and represent the statement in mathematical form. So withdrawal, deposit means plus sign. So withdrawal means we remove the money in our bank. So withdrawal means negative. Withdrawal means negative sign. So the 3000 attach a negative sign. So the numbers represent in negative integer. Numbers in represent in negative integers or write in mathematically minus 3000 rupees. Okay, minus 3000 rupees. So this is will be the answer. So student,
the first example and second example we have to solve. So similarly, in this way we have to solve remaining question in example 3. Okay, we solve remaining question in example 3 in your notebook. So next question is question number 4. Represent the following on the number line. Represent the number on a number line. आपको जो नंबर दिया है वो किस पे दिखाना है आपको? रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन. So we know the number line. First we draw a number line. Okay, first we have draw a number line. So which number is represent on number line? 3, and 3 is a positive integer. 3 is a positive integer. So we know all the positive integer is represent on a number line of the right side on number line. सभी के सभी जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो कहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ता है? राइट साइड ऑफ अ जीरो. रिप्रेजेंट ऑल द पॉजिटिव इंटीजर इज राइट साइड ऑफ अ जीरो. सो फर्स्ट वी राइट जीरो. सो in right side we have to present all the positive integers. Then 0 के बाद क्या आता है? 1 2 3 4 and so on. Okay, this is will be left hand side and this is will be right hand side. Okay, this is will be left hand side and this is will be right hand side. So the given number is 3. So from 0, how many step forward from right side? 1 2 and 3. How many step forward from 0? 1 2 and 3 step. 3 step from 0 on right hand side. So this will be the represent the digit 3 on number line. Okay, forwarded by 3 step. So second example is similarly solve second example. The given number is we have to see minus 10. So minus 10 is represented on number line. First will be draw a number line. Okay. So we know all the negative integers on number line we have to see on left hand side from a 0. Okay, जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो सभी के सभी जीरो के कौन से साइड में आएंगे? लेफ्ट हैंड साइड. ऑल द पॉजिटिव इंटीजर इज शो ऑन राइट हैंड साइड. सो ऑल द नेगेटिव इंटीजर सिमिलरली ऑल द नेगेटिव इंटीजर्स इज रिप्रेजेंटेड ऑन लेफ्ट हैंड साइड. सो वी हैव टू राइट फर्स्ट 0, देन फ्रॉम 0 ऑन लेफ्ट हैंड साइड राइट -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 and -10. So student, see how many step backward from 0? How many step backward from 0? This is will be left hand side and this is will be the right hand side. Okay, this is will be right hand side and this is will be left hand side. Then how many step backward from 0? The number is -10. So 10 step backward from 0. 10 step backward from 0. So represent a 10 step. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and finally 10. Okay, so 10 step backward from 0 on left hand side. So this is the minus step is represented on in this way on number line. Okay, the +3 is represented by forward 3 step on right hand side and -10 is represented by 10 step backward from 0 on left hand side. So student, in this way we have to solve a remaining example in question number 4.
So student, we have to give some example or some homework on question number 3 and question number 4. Solve the question number 3 and question number 4 only in exercise 1.1 in your maths notebook. Okay, एक्सरसाइज 1.1 की जो आपको दो एग्जांपल पूरे सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4. सॉल्व ऑल द क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ओनली. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपको लिखना नहीं है, वो अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं. सो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ओनली, ये दो ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है इन योर नोटबुक. ओके, ऑन द होमवर्क इज गिवन ऑन पेज नंबर 13 और ये सभी क्वेश्चन आपको पेज नंबर 13 पे दिए हैं. सो वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन इन योर नोटबुक. सो आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक और the some question today. So we have to see some another question in next period. Okay student, thank you.